finally tonight, everywhere else in India, it is all about Narendra Modi as the future of the BJP. But in one seat, it is also about the BJP's past. From Lucknow today, we bring you this special report from on the ground on why the BJP President Rajnath Singh is positioning himself as the inheritor of Vajpayee's legacy and why Vajpayee is still the gold standard for BJP leadership when it comes to the seat of Lucknow. In the ancient city of Nawabs, the BJP has been the ruler since the 90s. And one man remains the uncrowned king long after he has faded from active politics. For Lucknow, Atal Bihari Vajpayee, a 5-time member of parliament from here, can still do no wrong. The BJP's campaign everywhere else in India is all about Narendra Modi as its future. But here, the party's own president, in his avatar as Lucknow candidate, also repeatedly harks back to the past. A raucous welcome awaits Rajnath Singh at Lucknow's civil court as lawyers push and jostle to get a glimpse of the man who could be their next MP. The slogans are telling, not just Ab Ki Baar Modi Sarkar, but also Atal Bihari Vajpayee Zindabad. And Rajnath's own speech is littered with references to the BJP's former Prime Minister. देश को चलाने के लिए ऐसे केवल अर्थशास्त्री नहीं चाहिए, बल्कि देश को चलाने के लिए यथार्थ शास्त्री चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी यथार्थ शास्त्री। लखनऊ की जो एक हेल्दी ट्रेडिशन है, जो स्वस्थ परंपरा है, उस स्वस्थ परंपरा को कायम रखने में और उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत बनाने में जितनी भी अपनी भूमिका निभा सकता हूं, परमात्मा जो भी सामर्थ्य देगा वो मैं अपनी तरफ से मैं करने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजनाथ सिंह जीतेंगे। To cast himself in Vajpayee's mold in a historically multicultural, multi-religious constituency is clearly Rajnath Singh's aim. Even his chief campaign manager is Vajpayee's former personal assistant, Shiv Kumar. So whether it's prayers at the city Gurdwara or garlanding Dr. Ambedkar's statue and attempting an outreach with the Dalits, the BJP party president is seeking a Vajpayee acceptability and a softer image for himself. So what will be closely watched is how Lucknow's 4.5 lakh Muslims vote. In the age of Modi, will they consolidate behind the Congress candidate Rita Bahuguna Joshi, who lost by 40,000 votes in 2009, or will their vote get divided? It was in 1991 that the BJP first won the seat of Lucknow when Atal Bihari Vajpayee ran from here. After that, of course, Vajpayee went on to become a 5-time member of parliament from Lucknow. Vajpayee, of course, remains the gold standard for leadership in the BJP. So it's no surprise that Rajnath Singh has invoked Vajpayee's name as he began his campaign here. The big question, of course, is how the Muslims of Lucknow will vote. Constituting over 20% of the electorate here, they were happy to back Atal Bihari Vajpayee. But in the Modi era, will they back Rajnath Singh? Following again in Vajpayee's footsteps and in a move both controversial and atypical for the BJP leadership, Rajnath Singh even met every Shia and Sunni cleric that matters in Lucknow. This happened days after the BJP called Sonia Gandhi communal for a similar meeting with a Shahi Imam in Delhi. जब सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिली तो बीजेपी की बड़ी क्रिटिसिज्म आई, क्योंकि उसके बाद इमाम बुखारी का बयान भी आया कि सेक्युलर वोट, जिनको उन्होंने सेक्युलर वोट माना, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में और उनकी मीटिंग में क्या फर्क है? नहीं, मैंने कोई अपील नहीं की। इलेक्शन के बीच में आप इनसे मिलते हैं तो पॉलिटिकल एक तरह से कॉन्टेक्स्ट तो आ ही जाता है। जो कुछ भी
उससे जो कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रा करना हो कोई कर ले जी। लेकिन मैंने ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि पूरी कौम के लिए आप फतवा जारी करिए, ऐसा मैंने नहीं किया है। वह अपने मजहब के, अपने धर्म के एक मानिंदा लोग हैं, उनके गुरु हैं, उनके मौलवी हैं, जो कुछ भी हैं, बस उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए मैं गया था। The morning after, he faced the charge of hypocrisy from the Congress. But he had achieved his purpose. One of the most influential Shia clerics, Maulana Kalbe Jawad, said Muslims remain scared of Modi, but Rajnath, he said, is like Vajpayee. वाजपेयी जी का शहर है लखनऊ। अब यहाँ पर जो शिया मुसलमान है, इन द पास्ट दे हैव सपोर्टेड वाजपेयी जी। अभी मोदी जी के लीडरशिप में पार्टी का कैंपेन चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वाजपेयी को बैकिंग मिली थी मुसलमान तबका, उसी तरह से राजनाथ सिंह या आज की बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। राजनाथ सिंह साहब की इमेज जो है बहरहाल वो वैसी ही इमेज बन रही है जैसी अब वाजपेयी जी की थी, क्योंकि पहले बहुत खतरा था जब इनकी हुकूमत बनी है कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद अब जमीनी हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो अच्छे ताल्लुकात हुए वो उस वक्त हुए कि जब वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो तकरीबन उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं जिस तरह से हमारे वाजपेयी जी थे। और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र साहब के सिलसिले में सा मुसलमानों को थोड़ा सा अपने उससे खौफ है, तो डर महसूस होता है उससे, डर महसूस होता है उनसे। लिहाजा हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो इस सिलसिले में जो है वो ज्यादा बेहतर साबित है। The BJP may not have given a single Muslim a ticket in UP and has given only 5 Muslims tickets nationally. But in the old city, they tell us, in Vajpayee's time, Muslim clerics even read the Quran for him after his victory in 2004. Mr. Atal Bihari Vajpayee was a different person. He was a man who was loved by the citizens of Lucknow because of his personality, because of his individuality. And none other than Mr. Vajpayee could be that popular in Lucknow, whomsoever he may be. When it comes to the Muslim voter, invoking Vajpayee's legacy becomes all important for Rajnath Singh, especially to counter the lingering wariness around Narendra Modi. First of all, you know, Rajnath Singh and Atal Bihari Vajpayee are two different species. You know, they are two different human beings. Both of them are BJP, and BJP is supported by the RSS, but the attitude towards politics is slightly different. Vajpayee was a very local person. He was a thorough Lucknowite, steeped in the Ganga Jamna Tehzeeb. He would never say, like the present leadership of the BJP, that says, you know, ये हमारी परंपरा है और ये नहीं है. In Lucknow, it is under the Ganga Jamna Tehzeeb, both the pagdi and the skull cap is our parampara. At Lucknow's oldest tea stall, Sharma Tea Corner, the owner still remembers the day Vajpayee dropped in for a samosa. मैं तो यही मानूंगा वाजपेयी जी का ज़्यादा असर होगा कि उनकी बहुत मेहनत की उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ये था जैसे कि बीज बो देता है जमीन के अंदर, अपने आप को बो दिया है लखनऊ के अंदर, वही पनापने उन्हीं की वो है। जीतेगा कौन, राजनाथ जी? जीत जाएंगे, उम्मीद तो पूरी है वाजपेयी जी की वजह से। बिल्कुल, द क्रेडिट गोज टू वाजपेयी जी। In Lucknow, at least, the battle cry is not just "Ab ki baar Modi Sarkar," but also "Vajpayee se sabse zyada pyar." And Rajnath Singh is hoping to inherit that legacy as he creates a position for himself in national politics post 2014. In Lucknow, with Ruby Dhingra, Numan Siddiqui, Manoj Thakur, and Manu Nair, Barkha Dutt for NDTV.